Ajit Pawar died this morning when the charter aircraft he was travelling in crashed during an emergency landing attempt in Baramati in Pune district. Officials say the plane went down at around 8:45 a.m. while trying to touch down, and all 6 people on board were killed. The aircraft, a Learjet 45 registered VTSSK, was on a flight from Mumbai to Baramati when it encountered trouble during landing at Baramati airport. Aviation sources say the plane came down near the runway threshold and burst into flames, sending thick black smoke into the sky and leaving mangled wreckage around the site. Among those killed along with Pawar were his personal security officer, an attendant, and 2 crew members, including the pilot and co-pilot. The Directorate General of Civil Aviation confirmed that there were no survivors in the crash. Ajit Pawar had left Mumbai earlier in the morning after attending a Maharashtra Cabinet Committee on Infrastructure meeting. He was scheduled to be in Baramati for a series of public meetings and rallies ahead of local body elections. His sudden death in the crash has cut short both a political journey and a routine campaign routine. Visuals from the crash site show fire and smoke rising as first responders and ambulances rushed to the scene. Emergency teams, including fire services and local police, worked through the morning to secure the area and tend to the wreckage. Airport operations were temporarily suspended as rescue and safety work continued. News of Pawar's death has sent shock waves across the state. Political colleagues and rivals alike are expressing grief and calling it a tragic loss for Maharashtra. Leaders from different parties have begun travelling to Baramati to be with Pawar to official matters in the wake of the accident. मुझे बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, दर्दनाक है और हृदय विदारक है। आपसी मतभेद रहे हैं पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। और वो लाखों करोड़ों जो बारामती वाले हैं, महाराष्ट्र वासी हैं, उन सबको अपना संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी क्योंकि वो एक महाराष्ट्र के एक मैं कहूँगी अमंग्स द यंगर लीडरशिप थी और काफ़ी प्रॉमिसिंग लीडरशिप थी। उनका इस तरीके से जाना बहुत ही दर्दनाक है। बारामती में लैंडिंग के दौरान जो विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं तमाम चैनल्स, वो एक गंभीर विमान दुर्घटना है। मैं चिंता भी व्यक्त करता हूं, दुख भी व्यक्त करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उसमें जो लोग रहे हों सकुशल हों। इतना ही कह सकता हूं मैं फिलहाल। यही जानकारी दी जा रही है चैनल्स द्वारा कि डिप्टी सीएम अजीत पवार जी उस पर सवार थे। अभी कोई पुष्ट सूचना किसी तरह की नहीं है। मैं इतने ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूं कि मिरेकल्स होते हैं, वो सफल हो। जो सूचनाएं आ रही है ये सामाजिक क्षेत्र के लिए राजनीतिक 6 लोग सवार थे और अजीत पवार जी भी उसमें सवार थे, ऐसी सूचना आ रही है। अगर ये सच है तो आज का दिन दुर्भाग्य का दिन है। इतनी बड़ी दुर्घटना शायद हम पिछले दशक में ऐसी दुर्घटना कभी हमको दिखने को नहीं मिला। ये दिल को दहला देने वाली दुर्घटना है। भगवान करे उन सभी लोगों के परिवारों को शक्ति दें। इतनी बड़ी घटना, जो लोग उसमें सवार थे, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। केवल महाराष्ट्र सरकार के वो डिप्टी सीएम नहीं थे, बल्कि देश के एक जाने माने राजनेता थे। आज उनकी भरपाई शायद मुश्किल। Ajit Pawar air crash issue, it is very shocking news to us all.
very sad news. This kind of thing in this weather, the pilots has to be very careful. But I condole my to this shock come out with the blessing of God and family members. It's really unfortunate to hear the news. Ajit Pawar was 66 years old and a towering figure in Maharashtra politics. He was the nephew of NCP founder Sharad Pawar and a long-time strategist and finance chief in the state government. His sudden demise in an aviation accident draws national attention not just for the human loss but for its ripple effects on state governance at a critical electoral time. Investigators are expected to probe the crash to understand exactly what went wrong during the landing attempt. As Maharashtra mourns its deputy chief minister, questions will focus on both aviation safety and the immediate political impact of this tragic event. Updates are likely as more details emerge.